हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन सिंह कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, तेरे होमी को डोबरा उत्तरम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग चीज़ एंड गार्लिक नान कैसे बनाते हैं इंडियन ओवन के अंदर, तंदूर के अंदर। वन ऑफ आवर क्लाइंट से दैट हाउ यू मेकिंग दिस डिलीशियस चीज़ एंड गार्लिक नान, can you please make this video and can you upload this video in YouTube channel? I say of course we will do our best, and today I was I am going to be make this cheese and garlic naan. How we make paneer naan, how we make cheese and garlic naan, Indian cheese naan, I am showing in this video, and I hope you guys will be like this videos. Please like, comment and share how you like this one. So please be continue with me. Now I'm going to make cheese garlic naan in tandoor oven. Indian oven, we call that one in tandoor. This is very high temperature inside, maybe 300, not maybe, sure, more than 320 degrees centigrade, very hot. And how we making this naan in tandoor. Please be continue with me. So friends, now I am going to show you how we make this flour for naan. Now we put your water, egg, sugar and salt and milk. Now we will mix this one very nicely, and we add little bit oil also, then it's become more soft, more nice, to make it easy to mix this one. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप घर पे कैसे पराठा बना सकते हो, जैसे चीज़ और गार्लिक नान बना सकते हो, आलू कुलचा बना सकते हो, गोभी के पराठे बना सकते हो, पनीर के पराठे बना सकते हो। तो मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल दूंगा, उसको आप स्टफ में आप कुछ भी कर सकते हो, मिक्स वेजिटेबल कर सकते हो और आप उसका पराठा घर में बना सकते हो। मैं आपको बताऊँगा, यह है एस्तोनियन चीज़, यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। हम इसके बहुत सारे नान बेचते हैं, रेस्टोरेंट में यहाँ पर बहुत चलता है, और ये हमने कर दिया इसको स्टफ पेड़े के। Then after I do like this, we have this fresh chopped garlic and we do like this, and see, you can see how I put garlic on top. Then after we use that one and we put like this. Now I am showing how we put in tandoor. So this is our tandoor, is ready to make naan, and I will show you how we put inside the naan. You can see I use another hand for, we put like this and like this. You can see now naan is inside. This is cheese and garlic naan, and then after we close this one like this. Now our naan to be going to be ready, is cooking slowly, or it take approximately 1.5 minutes. Not it depend on tandoor temperature. Sometime the temperature high, sometime is low, but this take approximately 1.5 minutes. You can. और ये हमारा चीज़ गाली नान पक के बाहर आ चुका है। ये बन गया हमारा चीज़ गाली नान, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखने में देख सकते हो आप, बहुत अच्छा लुक्स है, काटे हुआ है। और तंदूर पनीर गार्लिक नान बना सकते हो, पनीर का नान बना सकते हो। आपने पनीर लिया, मैश किया इसको, इसमें हल्दी, मिर्च मसाला, धनिया चॉप करके, हरी मिर्च चॉप करके, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आप चाहे अजवाइन भी डाल सकते हो, भुना हुआ जीरा डाल सकते हो, भुना हुआ धनिया डाल सकते हो, और टेस्टी बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें इंडियन स्पाइसेस ऐड कर सकते हो। और उसमें हरा धनिया बारीक काट के हमने डाला हुआ है। अब देखिए, इसको हमने पेड़े के अंदर स्टफ कर दिया। नाउ यू कैन सी पनीर नान इज़ गोइंग टू बी कुक इनसाइड द इंडियन ओवन, वी कॉल दिस तंदूर, is going to be cooked. Tandoor is very hot, temperature plus 300 degrees centigrade, और
is going to be ready, and now we are going to be take out from tandoor. We are using this one for take out from tandoor, this stick. Now our cheese garlic paneer naan is ready. Now you can make same naan at your home. This is Indian cheese we mix with Indian spices and we mix with this dough, and now we will be make this one in pan. We put one pan in on fire, and then we put on fire, and it's going to be hot. Then after we will put little bit butter and oil on this pan. Small amount, not so much butter, not so much oil, that is cannot sticky in the pan, जिससे कि pan पे न चिपके. और now our paneer naan is ready. We are put on top there green coriander, fresh green coriander. You can see, looks very nice. And when our pan becomes hot, then we will put on pan, inside the pan, and we will cook both sides properly, nicely. You can see how our naan is going to be crispy. It's very delicious, very nice naan. You can make this naan at home how I showing you. You can make same like this cheese garlic naan, you can make potato naan, you can make cauliflower naan, you can make all vegetables naan, everything. You can make many naan. How much you want, how many you want, you can make many naan at home. You can see. Now finally our naan is ready. Very delicious, looks very nice also.